giant aircraft stands on the tarmac in Marseille, France. उसको हाईजैकर्स ने कब्जा कर रखा है उस जहाज पे, जो कि करना चाहते हैं worst ever atrocity the world has ever seen. उन हाईजैकर्स के पास है बहुत सारा गोला बारूद and they are heavily armed. The Prime Minister of France faces a dilemma. या तो वो इस प्लेन पे हमला कर सकते हैं और खतरे में डाल सकते हैं 173 पैसेंजर और क्रू की जान, या हो सकता है खो भी दें उनको। या दूसरा ऑप्शन जो उनके सामने है वो है कि इस प्लेन को उड़ने दे और हो सकता है उससे भी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़े उनको। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है हाईजैकिंग की जिसको कि दुनिया ने भुला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया हूं आज एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स का। एक ऐसा शो जिसमें हम चर्चा करते हैं इस धरती पे घटित अलग अलग समय में अलग अलग दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स की। और ये शो आता है आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज की शो में हम चर्चा करेंगे एयर फ्रांस की फ्लाइट AF 8969 की हाईजैकिंग की कहानी। 24 दिसंबर 1994 एयर फ्रांस की फ्लाइट AF 8969 is on its final approach to Algiers airport. ये पेरिस फ्रांस से एक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है टू द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। जो प्लेन है वो है एयरबस A300, जिसमें कि 12 क्रू सवार हैं। ये कोई ऑर्डिनरी लैंडिंग नहीं है, क्योंकि अल्जीरिया जो है वो उसमें एक सिविल वॉर चल रहा है और जो एयरपोर्ट का आसपास का इलाका है इट इज अ सीन ऑफ फियर्स फाइटिंग। और ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लेन लैंड कर रहा हो इस एयरपोर्ट पे उस पे मिसाइल द्वारा अटैक किया जा सके। The flights to Algiers are only done by volunteers because of the terrorist threat. We're all aware of it. We accept the risk. और ये इतनी खतरनाक बात है कि जो एयर फ्रांस है, जो कि फ्रांस का नेशनल कैरियर है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से भी ये बात पूछी है कि क्या ये जरूरी है कि एल्जियर्स तक की फ्लाइट की जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया है। 100 feet, 50 feet, 20 feet. We got press engage. एयर फ्रांस की जो ये फ्लाइट है AF 8969, उसको कमांड कर रहे हैं कैप्टन बर्नार्ड डेलान, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट। There were some security measures, like on any other flight, and a few extra ones since we were in Algiers. But at my level, I had no qualms about flying there. Even now, 10 years later, I can still say that I like doing in Algiers. ये जो प्लेन है वो जमीन पे बहुत थोड़ी देर के लिए ही रुकेगा। सिर्फ उतनी देर ही होगा ये जमीन पर जितना टाइम लगेगा इसको साफ करने में, रिफ्यूल करने में और फिर से
पैसेंजर्स बोर्ड करने में फॉर द रिटर्न ट्रिप। और जो पैसेंजर्स इस प्लेन में सफर होंगे वो ज्यादातर जो है अल्जीरियंस हैं, और उनमें से कुछ जो है वो फ्रेंच भी होंगे, जो कि अल्जीरिया में जो इतना आतंक चल रहा है इन दिनों, उससे बचने के लिए कुछ दिन वापस फ्रांस जा रहे हैं। 3 साल पहले रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ने इस देश अल्जीरिया में सत्ता हथिया ली थी, और वो चाहते थे कि अल्जीरिया में भी एक रिलीजियस स्टेट कायम किया जाए, लेकिन मिलिट्री ने वापस पावर गेन कर ली थी, और उसके बाद वो जो सारे रिलीजियस लीडर्स थे उनको वापस जेल में डाल दिया गया था। और उसके बाद एक ही चीज अल्जीरिया में रह गई थी, और वो थी chaos. Like every other year, I decided to come and spend the holidays in France, and I had a cousin with me. I was chief stewardess at Air Algeria, and I wouldn't take any other flight but Air Algeria normally. But when I arrived at the airport, there were no seats left. The flight was full. But an Air France booking agent suggested that I take the Air France flight. So I did. At least I'd be certain of taking off. बोर्डिंग अब लगभग खत्म हो रही है, और एक बार फिर से पुलिस एक फाइनल चेक के लिए प्लेन को बोर्ड करती है। Presidential police, you two take the rear. Police, nobody move, please. Presidential police, we're carrying out an identity check. All right. No, you stay here, we'll handle it. It'd be best if I made an announcement. Okay, go ahead. Ladies and gentlemen, good day. This is your captain speaking. There will be a short delay while the police will come to their cabin to carry out a passport check. Please remain seated. We apologize for the inconvenience. We should be on our way shortly. Passport. Passport. When they came towards us, they were armed. And that's really unusual. Passports, please. ये जो अनएक्सपेक्टेड डिले हो रही है फ्लाइट 8969 के टेक ऑफ में, वो बना रही है मिलिट्री को सस्पिशियस थोड़ा। और जो अल्जीरिया की स्पेशल फोर्सेस हैं, जिनको कि निंजास बुलाया जाता है, वो ऑलरेडी इस जहाज की तरफ बढ़ रहे हैं। I looked outside and I could see the ninjas out there, the Algerian special forces. I said to myself, why are there so many of them? Tarut means infidels. And when he said that, I knew straight away that they were terrorists. There it was. All of you, get to the back! Hurry! Shut that voice of Satan! Sit down! You two, don't move! Nobody move! We are not the police. We are Mujahideen. वो दोस्तों पुलिस नहीं थे, हाईजैकर्स थे, जो कि किसी भी सूरत हाल में अल्जीरिया में सत्ता पे आना चाहते थे, और इस जहाज पे कब्जा करना उनके एक प्लान का ही हिस्सा था। कुछ भी कीमत उन्हें चुकानी पड़े, वो सिर्फ यही उनका मकसद था कि किसी न किसी तरह अल्जीरिया में सत्ता में आ पाए। Inshallah! When that happened, it was like a rock falling. Like lead. I don't know which. It was horrifying. Look at this! This is a very powerful bomb! There are others just like it! Ready for a great fireworks show in the sky! We are the Mujahideen of the people! God has chosen us to die, and you to die with us! उन हाईजैकर्स का लीडर था एक 25 वर्षीय इंसान, जो कि एक नामी किलर था। There is nothing to fear. God awaits us all in his heavenly paradise.
जहाज के बाहर ये खबर बहुत तेजी से फैल जाती है और मीडिया, प्रेस, रिपोर्टर्स वहां पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं जहाज के बाहर। दूसरी तरफ पेरिस में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उनको बुलाया जाता है। ही वॉज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एंड ही वॉज हैविंग अ फेस्टिव सीजन, फेस्टिव टाइम, तो उनको वापस बुलाया जाता है। ये जो है ये बन गया है एक इंटरनेशनल क्राइसिस। I spent the whole afternoon on the phone trying to find out exactly what was going on. It was pretty confused. The Algerian authorities were determined to get tough, and it was difficult to discuss the problem with them. Give me your jacket, Captain. दूसरी तरफ अल्जीयर्स में जो हाईजैकर्स हैं वो फ्लाइट क्रू की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं so as to confuse the army's snipers. Cover your head. Cover your head more. You too. Their Islamic customs were not being respected. Men and women sharing the same toilets, sitting next to each other. And above all, women with their heads uncovered. That was intolerable for Lotfi, and it threw him into a rage. Lotfi's character is very peculiar. We called him the madman because really he was always on a knife edge. He had fits of rage. He was always on the brink of fury. What he saw there in the cabin was intolerable for him. He had to cover these women up. Now, 2 hours into the hijacking, the hijackers want to talk to the Algerian military. You in the tower. We have taken control of this Air France flights. We are the armed Islamic group. Do you hear me? Do you understand? Do you hear me? What is wrong with this thing? They don't hear me. They couldn't hear you because you both talked at the same time. You have to start again. You tell them. Do it. Air France 8969. What do you want me to say? जो हाईजैकर्स हैं वो ऑर्डर करते हैं कैप्टन देलाम को कि वो अपने जहाज को पेरिस लेके जाएं और जहां पे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, लेकिन प्लेन जो है वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि जो पैसेंजर्स बोर्डिंग स्टेयर्स थी वो अभी तक इस प्लेन के साथ अटैच्ड हैं और दूसरी तरफ अल्जीरियन अथॉरिटीज ने जो है व्हीकल्स, गाड़ियां पार्क कर रखी हैं और रनवे को ब्लॉक कर रखा है। Air France 8969. The passenger boarding stairs are still in place. Please remove them immediately. कैप्टन की ये रिक्वेस्ट की सीढ़ियों को हटाया जाए रिफ्यूज कर दी जाती है। We are going to blow up the world. We are going to blow up the plane and everyone in it. Do you hear me? Do you hear me? हाईजैकर्स के लिए यह बहुत ही टफ सिचुएशन बनती जा रही है क्योंकि अल्जीरियन गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह से इनके सामने झुकना नहीं चाहती और ये एक ऐसी चीज है जिसका कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा कीमत पे करनी पड़ेगी थोड़ी देर के बाद। We are going to blow up the world. We are going to blow up the plane and everyone in it. Do you hear me? Do you hear me? हथियार बंद हाईजैकर्स ने एयर फ्रांस की फ्लाइट AF 8969 को हाईजैक कर दिया है और वो उड़ा के लेके जाना चाहते हैं उसे पेरिस, लेकिन अल्जीरियन गवर्नमेंट जो है ये उनको परमिशन डिनाई कर रही है, परमिशन नहीं दे रही है कि वो प्लेन को यहाँ से उड़ा पाए और फिलहाल के लिए ये एक स्टेलमेट कंडीशन बन गई है। I'll say it one more time. Please remove the boarding stairs so that we can leave for Paris. You think we are joking? We will show you how we are joking. We are soldiers of God. We are ready to die. We will show them. अब जो है हाईजैकर्स अल्जीरियन गवर्नमेंट को एक संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने जब पासपोर्ट चेक किया था पैसेंजर्स का
तो उनके सामने आया था एक इंसान जो कि था from the Algerian police और उस इंसान को मार दिया जाता है by the hijackers. Then 2 rows behind me, there was a policeman. Can you come with us, please? We need your help. He asked the policeman to follow him. It's crazy, I don't know if he knew, but he was very hesitant. He was walking, but reluctantly, because he didn't know what was going to happen to him. Open the door, please. So please take our message to the government. कुछ पैसेंजर्स को तो इस बात की खबर थी, लेकिन पायलट्स को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि एक इंसान को मार दिया गया है पैसेंजर्स में से. The first contact we were allowed with the cabin was when a stewardess was allowed into the cockpit to see if we wanted anything. I said, we'd like a glass of water, because it was hard to swallow, as you can imagine. Our throats were very dry. Just then, she whispered to me, they've already killed the passenger. I was dumbfounded because we had no idea. We'd heard nothing. लेकिन पैसेंजर्स हैं चिंतित ज्यादा उस बात के लिए कि जो प्लेन के बाहर घटित हो रही है. ऐसा लग रहा है कि जो अल्जीरियन स्पेशल फोर्सेस हैं वो इस जहाज पे एक सशक्त हमला कर सकते हैं. The biggest worry that we all had was that the ninjas, the Algerian special forces, would attack the plane. Things were going on inside the plane, sure, but anything that would come from the outside would upset things, and that scared us. जैसा कि फ्रांस के उस समय के इंटीरियर मिनिस्टर चार्ल्स पास्कुआ जानते थे कि निंजास कैसे ऑपरेट करते हैं. They were trained by us. We were taking a considerable risk by letting this plane stay in Algiers, because we knew that although the Algerian forces were perfectly capable of ending the siege, it would have ended in a bloodbath. अल्जीरियन मिलिट्री जो थी वो अपनी बात पे अड़ी हुई थी और अब हाईजैकर्स को इस बात का जवाब देना था उनको. When they came for the second passenger, we knew things were going wrong. This passenger, he was different. He was Vietnamese, a diplomat. He was the real foreigner on this plane. This passenger was not cowed by their terror, and that must have bothered them. पैसेंजर्स में था एक वियतनामीज डिप्लोमेट और शुरुआत में उसे ऐसा लगा कि शायद हाईजैकर्स उसे छोड़ रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग है. लेकिन उसे भी मार दिया जाता है दोस्तों. To make things simpler, we gave them names. Yaya gave us his name straight away, so that was easy. He was in charge. He looked a little bit like a student. He was friendly enough, very calm, except when he flew into a rage, and then he would act like a gangster. Lotfi, the madman,
was the one who insisted we follow their laws, the one who was the most fanatic, the most fundamentalist. He'd already been in prison and been tortured. He had a hatred of the government, and he had a very short fuse. He was the dangerous one, the real psychopath. The third one didn't have a name. We called him Bill. He was a little bit simple. You wondered what he was doing there, and you could see him wondering the same thing. It was an error in casting. He was more of a goat herd than a terrorist. Then, finally, there was the killer. It was he who did the shooting, and who cleaned his gun afterwards without any remorse or feeling. I wonder if he knew what he was doing. The tallest one, the killer. When we passed each other on the plane, he would take me by the neck and kiss me on the forehead. And later on, the meaning of this was more or less confirmed to me. People told me that this could be seen as the kiss of death. Can I say something? I want to ask you a favor. If you decide to kill me, I want you to promise me. I don't want to be killed by a bullet in the back, because when I die, I want to be able to see your face. What are you afraid of? Well, it's impossible not to be afraid with what's going on the plane. Don't need to worry. Because if I kill you, you will be a martyr. You will go straight to paradise. I can tell you that it didn't make me feel any better. अल्जीरियर्स में सिचुएशन जो है स्टेलमेट है, दोनों ही साइड झुकना नहीं चाहती। दूसरी तरफ पेरिस में जो फ्रेंच लीडर्स हैं, दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। वो ऐसे समझते हैं कि उनकी जो स्पेशल फोर्सेस है वो इस क्राइसिस का बहुत ही जल्दी से अंत कर देंगी, लेकिन जो अल्जीरियन गवर्नमेंट है वो किसी फॉरेन ट्रूप्स को अल्जीरियन मामले में इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं दे रही है। I asked the Algerian authorities extremely forcefully and urgently to let the plane take off, because I considered that it was a French plane belonging to Air France, which, although it had on board a majority of Algerians, had dozens of French there too. So it was for us to solve the problem. Night falls. रात हो गई है। एयर फ्रांस का वो जहाज जो है वो स्पॉटलाइट के अंडर है। जो शुरुआत का जो पैनिक था, टेरर था, इट हैज गिवन वे टू टेंस कामनेस। कुछ पैसेंजर्स ऐसा भी समझते हैं कि 2 लोगों को मार दिया गया है। क्रू जो है पूरी कोशिश कर रहा है टू डिफ्यूज दिस सिचुएशन, और ये पिछले 7 घंटों से बंधक हैं इन हाईजैकर्स के। All these buttons, like here, for instance, it's the APU, auxiliary power unit. The role of a crew in these conditions is to keep things calm, to earn trust, to keep things going, which is very important. At the start of a hostage-taking, it's always violent. You have to buy time.
to calm people, to show what you're like, to find out who they are, and so on, and then try to gain their trust. Ça va jusqu'à la conversion de deux. There was the conversion to Islam of 2 stewardesses, of whom I was one. It was a request from the terrorists. I don't have any disrespect for believers, but if it could help calm the terrorists down, then I didn't have any problem faking a conversion. Ça ne me posait pas de problème moral. We are going to blow up the world! We are going to blow up the planet, everyone in it! Do you hear me? Do you hear me? सारी रात धमकी और अल्टीमेटम चलते रहे, लेकिन अल्जीरियन गवर्नमेंट जो थी वो झुकने को तैयार नहीं थी. At one point it was quite calm. I made a tour of the cabin about 2 in the morning. There were 2 of them lying on the floor between door 1 left and door 1 right. I thought, look, 2 of them are asleep, one's at the rear, there's only one in the cockpit. If an assault took place now, maybe it wouldn't be so bad. But that's as far as it went. After a restless night, the passengers woke up next morning. वो थी 25 दिसंबर, Christmas. It was a marvelous gesture. There was one person we called Father Christmas because he said, "You've worked hard enough, now it's my turn." And he took round all the bottles of water and glasses to the passengers. The passengers joined in. That's to say, they tried to eat something, to do normal things, to make the atmosphere a little bit more normal and a little less stressful than it really was. It was the waiting, because in reality, we could do nothing but wait. रात के समय फ्रेंच गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजेंगे टू द आइलैंड ऑफ मयोका, जो कि अल्जीरिया के सबसे करीब था, और यहाँ पे उन पे आरोप भी नहीं लगाया जा सकता था अल्जीरियन गवर्नमेंट द्वारा कि वो अल्जीरियन मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं. कर्नल फाविये जो थे उस समय मेजर थे, वो इस टीम के इंचार्ज थे. The decision was taken to send GIGN to Majorca. An Air France aircraft was put at our disposal, identical in every respect to the hijacked aircraft, as well as an experienced crew who knew the technical side, all the details of the plane. जब वो अपनी जर्नी पे थे उस आइलैंड की, उससे पहले जो स्पेशल फोर्सेस की टीम थी वो पूरा फेमिलियराइज हो गए थे विद द एयरबस A300. इस आशा में थे कि उनको शायद एक चांस मिल जाए इस एक्चुअल एयरबस A300 पे हमला करने का. दूसरी तरफ अल्जीयर्स में जो हाईजैकर्स हैं उन्होंने कुछ पैसेंजर्स को छोड़ दिया है, और वो बेसिकली थी लेडीज विद छोटे चिल्ड्रन और जो लोग जिनको की सीरियस मेडिकल कंडीशंस थी. लेकिन फिर भी जहाज में अभी भी सवार हैं 150 से ज्यादा लोग, और ये जो पैसेंजर्स हैं वो नहीं है जो हाईजैकर्स समझ रहे थे उनको. I don't know how the terrorists organized their business. They certainly put a lot of thought into it. They obviously wanted to seize a symbol of France, and Air France is a national symbol. But perhaps they didn't realize that in an Air France plane at Algiers, most of the passengers would be Algerians. प्लेन में जो पैसेंजर सवार हैं उसमें से 138 आर अल्जीरियन सिटीजन्स, और हाईजैकर्स उनको ये बोलते भी हैं कि वो लोग जा सकते हैं प्लेन को छोड़ के, और वो जो फ्रेंच सिटीजन है उनको वो नहीं छोड़ेंगे. एक क्लियर इंडिकेशन कि बाद में वो फ्रेंच सिटीजन के साथ क्या करना चाहते थे, लेकिन जो ये जो अल्जीरियन सिटीजन्स हैं
ये भी मना कर देते हैं प्लेन को छोड़ के जाने के लिए. It's true that in Algiers they were going to free some of the passengers, and they refused to get off. I think that one of them said, if we leave, then afterwards they're going to kill the crew, so I'm going to stay. I think that this man was sincere. I can't explain it, but it was the truth. जो अल्जीरियन गवर्नमेंट है वो खेलती है एक और दाव. वो जो हाईजैकर्स के लीडर था उसकी वो मदर को माइक पे लेके आ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मदर शायद कन्विंस कर पाए अपने बेटे को ये हाईजैकिंग छोड़ने के लिए. Ma! Ma! I love you, but I love God more! लेकिन गवर्नमेंट का ये जो दाव है वो उल्टा पड़ जाता है. They went and got my mother. Can you imagine that? My mother! They went and dragged my mother over here! How many friends are back there? One man and woman. Go get the man. What do they think they're playing at? What do they think they're doing? He was furious. He had no intention of changing his mind. Even the love of his mother, even his mother couldn't do anything. उस जहाज पे सवार हैं फ्रेंच एम्बेसी के 2 स्टाफ, एक कुक और एक सेक्रेटरी. Okay, now we will teach you how to play games with us. Are you listening to me? You tell them that if they don't let the plane take off, we will kill every single passenger one by one. Tell them. My name is Yannick Beunier. I work at the embassy. They're threatening to kill us. If you do nothing, they'll start the executions. You've got to do something, and quickly. Quick as you can. We care nothing for you. We are soldiers of God. We'll kill him and we'll throw him outside the door. You can come and pick him up. Get me a magazine. He was terrified, Yannick. He was looking at me, but he was terrified. Was he pleading with me to help him? Was he? You two, we better off going back to your places. Go! I was saying to myself, no, it's not possible. It can't happen like this. It's not possible. और हाईजैकर्स उनमें से एक को मार देते हैं. Okay, now we will teach you how to play games with us. Are you listening to me? You tell them that if they don't let the plane take off, we will kill every single passenger one by one. Tell them. My name is Yannick Beunier. I work at the embassy. They're threatening to kill us. If you do nothing, they'll start the executions. You've got to do something, and quickly. Quick as you can. We care nothing for you. We are soldiers of God. We'll kill him and we'll throw him outside the door. You can come and pick him up. Get me a magazine. He was terrified, Yannick. He was looking at me, but he was terrified. Was he pleading with me to help him? Was he? You two, we better off going back to your places. Go! I was saying to myself, no, it's not possible. It can't happen like this. It's not possible. Air France 8969. You happy now? See what you get when you play tough. On a assisté à distance. We witnessed at a distance the execution of this man.
It was something we lived through with great emotion in Paris, because we were patched into the conversations between the plane and the control tower. तीसरी मौत के बाद फ्रेंच गवर्नमेंट चुप नहीं रह पाई और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने अल्जीरियन प्रेसिडेंट को फोन करके बोला I told him that I would hold the Algerian government responsible for what happened and make it known to international opinion. इसके बाद तो अल्जीरियन गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ा. Finally, after 39 hours of terror, Air France की flight AF8969 was given permission to leave for Paris. Just then, there it was. We could leave. In the plane, there was a joy you could not imagine. And really, this impression that that was it. We'd succeeded. We had all succeeded and we were going to be saved. We were leaving Algiers. लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है. जितनी देर तक ये जहाज जमीन पे खड़ा हुआ था, तो कैप्टन ने ऑक्सिलरी पावर यूनिट को ऑन रखा था. ये एक छोटा सा जेट इंजन होता है on the tail of the plane which keeps the power supply running, और ये यूज करता है तकरीबन 4 टन फ्यूल एक दिन में. और इस 2 दिन की हाईजैकिंग के बाद उतना फ्यूल ही नहीं था प्लेन में कि वो पेरिस तक जा सके. Navigation lights on. Air conditioning packs. वो प्लेन जा सकता था सिर्फ मार्सेई तक, जो कि फ्रांस के सदर्न पार्ट में एक शहर था. एयर फ्रांस की फ्लाइट AF8969 prepares to leave. जो क्रू है इस जहाज में, they are very happy कि वो वापस घर जा रहे हैं. पैसेंजर्स और क्रू ये सोच रहे हैं कि जो वो पीछा छोड़ के जा रहे हैं उससे बुरा तो अब कोई उनके लिए होगा नहीं, लेकिन कितना गलत वो सोच रहे हैं इस बारे में. दो दिन के टेरर और 3 मौत के बाद एयर फ्रांस की फ्लाइट AF8969 फाइनली तैयार हो रही है पेरिस जाने के लिए, जहां पे कि हाईजैकर्स चाहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना. Before takeoff checklist completed. What is it? What's wrong? Look, since the start of this whole thing, I followed your instructions. You want to get to Paris to talk to the journalists. I'll take you there. But I want to know if you're going to blow up the plane between Algiers and Marseille. Why do you ask if I'm going to blow up the plane? Because the responsibility for these passengers is on my shoulders. No, there's nothing to worry about for you or the passengers. We fly to Marseille, like you said, refuel the tanks, and then we go to Paris. I give you my word. All right. Good. Let's go. Me, I believed them when they told me that the plane would not be blown up between Algiers and Marseille. I don't know if they would have given me the same answer between Marseille and Paris. When someone's got explosives, they're not for making a birthday cake. We have 2 terrorists strapped in their seats in the cockpit, and they're so excited. They're like kids, excited, happy. What's more, they'd succeeded. सुबह के 3:30 बजे दिसंबर 26 को एयर फ्रांस की ये फ्लाइट जो है अप्रोचेस दी मार्से एयरपोर्ट, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस की टीम उनसे पहले मयोका से पहले यहाँ पहुंच गई है और वो प्लानिंग कर रहे हैं
for a showdown. Normally you arrive on ground that's held by the enemy, but here it's the enemy who's going to arrive on ground where you are in total control. And that's a key element in the success of the operation. 50 feet. 20 feet. For the terrorists, it's the magic moment. We are landing in France. We'll get fuel. We'll get provisions to take off again and go to Paris, because that's the objective. The airport is very dark. There are the lights of the plane and the little car, the Follow Me car, which we follow, and we do not go to the terminal. The plane is deliberately taken to a remote corner of the airfield. Tension जो है इस समय बहुत ही हाई है क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट को मिली है कुछ बहुत ही alarming news. While the plane was flying towards France, we received other information, according to which the terrorists planned to use the plane to carry out an attack on Paris. The information was credible, and we took it seriously. So the decision was made that no matter what, the plane would not take off from Marseille. No matter how high the price may be, the plane would not take off. We picked a very precise spot for the plane to park, and then we just played for time. French government का ऐसा मानना था कि वो they will follow the tactics की to wear down the hijacker. ये हाईजैकिंग जो है जो तकरीबन 2 दिन से चल रही है, जो हाईजैकर्स होंगे वो भी इस समय तक काफी थक गए होंगे, तो गवर्नमेंट जो चाहती थी कि वो नेगोशिएशंस को जितना लंबा खींच सके खींच ले, जिससे कि उनको हाईजैकर्स को थकाया जा सके. Air France 8969, we require immediate refueling. 27 tons! 27 tons. हाईजैकर्स को फ्लाइट क्रू से पता लग गया है कि 27 टन फ्यूल और चाहिए होगा उनको पूरा टैंक भरने के लिए, और ये 9 टन से बहुत ज्यादा है जो कि चाहिए होगा मार्से से पेरिस जाने के लिए. और ये जो है हाईजैकर्स का जो ये कार्य है ये कंफर्म करता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट को मिली थी कि हाईजैकर्स जो है ये प्लेन को यूज करना चाहते हैं एज अ फायर बॉम्ब ऑन एन अटैक ऑन पेरिस. They say it's not possible because of the killings, because of what happened in Algiers. It's in all the papers. The workers who do the refueling are afraid. They won't come near the plane. Tell them we want to go now. We'll do a press conference in Paris. Air France 8969, they want to leave for Paris right away. They wish to hold a press conference in Paris. You say, why go to Paris while all the international press has come here to Marseille? They're all here. Why do a press conference in Paris? There's no point. We can do it here on the plane. जो हाईजैकर्स हैं वो फाइनली एग्री करते हैं कि वो जहाज के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और ये बात पता नहीं है कि ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है जो कि बुन रहे हैं फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस के इंचार्ज. Tactically, this press conference was important because it enabled us to get some of the passengers moved to the rear of the plane. जो नेगोशिएटर्स होते हैं वो इन हाईजैकर्स को बोलते हैं कि प्लेन का जो आगे का भाग है बिल्कुल साफ कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए. लेकिन ये इसलिए कराया जा रहा है कि जब फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस अटैक करे प्लेन पे तो कोई पैसेंजर्स बीच में ना हो.
और हाईजैकर्स को इस बात का भी पता नहीं है कि जो प्लेन के दरवाजे हैं वो बाहर से भी खोले जा सकते हैं। Are they coming? No, not yet. अब तक जो है वो प्लेन पिछले 12 घंटे से मार्स से टैक्सीवे पे खड़ा है। जो फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस हैं उनको पता है कि हाईजैकर्स कितने हैं और प्लेन में कहां-कहां स्थित है। ऐसा माना जा रहा है कि स्पेशल फोर्सेस ने प्लेन के फ्यूसलाज पे माइक्रोफोन लगा दिए हैं और अब वो सिर्फ सूरज के डूबने का इंतजार कर रहे हैं जिससे कि अंधेरे में वो इस जहाज पे हमला कर पाए। और दूसरी तरफ प्लेन के अंदर किसी को भी इन सब बातों का पता नहीं है। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं प्रेस के अराइवल का जिससे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जा सके। Tower 8969. Everything's ready here. You can send the press now. (8969) What do you mean they're not ready? No. You said they were ready over an hour ago and you were going to get them. Come on, there's not much time left. There must be hundreds of journalists there. This will be the biggest scoop of their careers. They're up to something. We can't stay here. I assure you, it's... Captain, move the plane over there. I promise you, we'll be... Captain, move it right now. Do it. Move the plane over there where the other ones are. We'll be fine. I promise. Move the planes! Go over there where the other ones are! Do it! Do it! Let's go. Start engines. अचानक ही फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस के जो प्लान्स होते हैं दे आर इन डिसअरे। जो हाईजैकर लीडर है हाईजैकर्स का नाउ ही हैज द इनिशिएटिव। Tactically for us, the situation was very bad. Our positions were based on the plane being parked at point A, and all of a sudden it's at point B. So we have to reorganize very quickly. Captain Delem is forced to park right at the foot of the tower, close to the terminal and other flights. If they blow up the plane now, the casualties could be enormous. Tell them it's too late now! There won't be a press conference, it's too late, it should have been done! Tell them to fill the tanks, we're leaving! They have until 5 o'clock, at 5 o'clock, we're taking off! Tell them, Captain, do it! I've had it, do it! Air France 8969. Captain Della is forced to park the plane now at the foot of the tower next to the terminal and other flights. और अगर इस समय प्लेन को उड़ाया जाता है तो कैजुअल्टी फिगर बहुत ही ज्यादा हो सकती है। जो फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस हैं उनके पास बहुत ही कम समय रह गया है। दे हैव टू नाउ रीऑर्गेनाइज देयर प्लान और अपनी जो टीम है उसको अपनी नई पोजीशंस पे असाइन करना है। और जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसके ऊपर उनके स्नाइपर्स होंगे विच विल हैव द क्लियर व्यू ऑफ द कॉकपिट। लेकिन बहुत ही शीघ्र फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस को अपने ये इमरजेंसी प्लान को वर्क करना है। 3 air stairs and 30 men. This is the plan. Penetrate by the 2 rear doors with 2 teams of 11 men each at the rear right and rear left doors, and then a penetration by a smaller team of 8 men at the front right door to gain control of the cockpit, since we know that the terrorist leader is in the cockpit. Our intention is to cut off the cockpit from the rest of the plane. 5 बजे तक कोई भी फ्यूल डिलीवर नहीं किया गया है इस जहाज को। जो फ्रेंच अथॉरिटीज हैं वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहती कि ये प्लेन मार्से की जमीन छोड़े। 5 o'clock comes round, and there it's the moment when Yaya has to do something. Yaya doit faire quelque chose.
जो हाईजैकर्स का लीडर है वो फिर से कैबिन में घुसते हैं to choose his fourth victim, लेकिन वो थोड़ा झिझक भी रहे हैं. He chooses a member of the crew, the youngest, the most foreign, who had made the mistake of telling him he was an atheist. I don't want to do this, but I got no choice. I don't know what was going on in Yaya's head, and we never will. I don't know if he changed his mind, but he kept putting off this execution. So instead of that, he fired on everything around. The hijackers know they are in the endgame. But then they discovered there was a public address and they started reciting verses from the Quran. It was very difficult because it was the prayers for the dead. We had to prepare ourselves for death. We were going to die as martyrs. God was waiting for us. There was silence, and all of a sudden it was a state of panic. हाईजैकर्स को भी अब लगने लगा था कि उनका खेल अब खत्म होने वाला है. हाईजैकर्स को ये पता था कि जो फ्रेंच नेगोशिएटर्स हैं वो कंट्रोल टावर में स्थित हैं, तो वो उनको एक मैसेज सेंड करने की ठानते हैं. One of the terrorists opened the side window of the cockpit and hosed down the control tower. The glass shattered all around us. We were literally machine-gunned. Since we had landed in Marseille, there had been some moments of tension, but nothing like what seemed to be about to happen. We're gonna succeed in our mission, Captain. Don't worry about that. प्लेन के पिछले भाग से फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस की 2 टीम प्लेन्स में घुसती हैं. When the terrorists started firing with an automatic weapon on the tower, there was danger inside the plane, so we now had justification for an armed attack. That attack was carried out from the air stairs, which are mobile vehicles. They're coming, the terror coming! At that moment, everybody understood, them and us, that it was the beginning of the assault. There are 8 of us on the front right air stair. The first air stair gets to the aircraft. There's a small problem with the height, as it was a little bit higher than the door. The door hits the top of the air stair, a slight step back, the door opens, the air stair touches the plane, and the group goes in. Then it's the apocalypse. Get down! Get down! And then the group that has gone in comes under a deluge of fire from the terrorists who shoot at everyone who enters, an extremely murderous fire. There's not a moment's doubt about the nature of this gunfire. They are shooting to kill. At the rear of the plane, the other 2 squads of Favier's men enter. So I hear, hands on your head, don't move, hide, get down as low as you can. I just wished to escape. The situation we were in was extremely violent, so I pulled the overcoat I had over my head so I wouldn't see the tracer bullets whizzing past, nor what was going on around. कितनी ही सौयों गोलियां कैबिन में चल रही हैं, ग्रेनेड्स एक्सप्लोड हो रहे हैं हर तरफ सिर्फ पैनिक और कियोस और जो है गोलाबारी ही चल रही है कैबिन में. I was in a rather bad spot, so I tried to make myself as small as possible. You stop breathing and you imagine that you're hard enough to stop the bullets.
जो स्नाइपर स्थित हैं टर्मिनल बिल्डिंग पे, उनको क्लियर व्यू मिल रहा है, वो देख पा रहे हैं हाईजैकर्स को कॉकपिट के अंदर, बट दे कैन नॉट गेट अ क्लियर व्यू क्योंकि जो को पायलट है वो उनका व्यू ब्लॉक कर रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी जल्द ही सॉल्व होने वाली है। जो को पायलट हैं वो हार्ड कंक्रीट पे गिर जाते हैं लेकिन किसी तरह बच जाते हैं, और अब स्नाइपर्स को क्लियर व्यू मिल रहा है ऑफ द हाईजैकर्स इन द कॉकपिट। दूसरी तरफ जो स्पेशल फोर्सेस है, फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस है, वो पैसेंजर्स को एवैक्यूएट कर रही है फ्रॉम द रियर पार्ट ऑफ द प्लेन, एंड जो है ये सब कार्य जो हो रहा है वो सब गोलाबारी के बीच में हो रहा है। लेकिन फ्लाइट स्टूवर्ड क्रिस्टो मोरान finds himself unable to escape. I tried to take with me a woman, a passenger who had been sitting next to me, but she was too fat. She could not come. So we just held hands. Assault के शुरू होने के कुछ ही मिनटों में ज्यादातर पैसेंजर्स जो हैं उनको बचा लिया जाता है। अब सिर्फ एक ही हाईजैकर जिंदा रह गया है, लेकिन he is also going down fighting. There was only the flight engineer and me left in the cockpit. We looked at each other, and there's just this one terrorist. He looks at us, one after the other. His 3 colleagues are here, dead or nearly so. Out of spite, he could have killed both of us. He didn't. What more can I say? I think that after 54 hours, there is mutual recognition and respect, quote-unquote, between the terrorists and the hostages. Yes, bonds were created in this drama. And I think these bonds were activated, and that they perhaps contributed to saving the lives of some members of the crew. जो ये इकलौता हाईजैकर बचा है, वो इन स्पेशल फोर्सेस को 20 मिनट तक दूर रखता है अपने आप से, लेकिन उसका टाइम और उसका जो एम्यूनिशन है वो इट इज रनिंग आउट। The flight engineer and I looked at each other. We knew exactly the situation we were in. As long as there were gunshots, we knew we could die. But once it stopped, or when we thought it had stopped, then we said, all right, it's over. लेकिन फ्लाइट के कैप्टन और उनके फ्लाइट इंजीनियर के लिए ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्पेशल फोर्सेस थी उनको ये नहीं पता था कि कौन हाईजैकर्स हैं और वो कितने बच गए हैं। तो सभी के सभी ही जो था संदेह के दायरे में थे। जो कॉकपिट के आसपास लड़ाई हो रही थी वो इतनी जबरदस्त हो रही थी कि स्पेशल फोर्सेस यही समझते हैं कि सारे जो फ्लाइट क्रू थे वो मारे जा चुके हैं, और जो फ्लाइट इंजीनियर है उसको वो पकड़ के लेके जाते हैं हथकड़ियों में। Get up. Hands on your head. I'm the captain of the plane. Now we'll get out. But not with my hands on my head. I would never have left the cockpit with my hands on my head. After all I had been through, I would not be punished like a child. When we saw Bernard and Alain come out, we couldn't believe it. Alain was handcuffed and his shirt was covered in blood. He said, I'm deaf. But we said, yes, but you're alive. We told them, he's our flight engineer, let him go. It was incredible. तकरीबन 20 मिनट तक प्लेन के ऊपर जबरदस्त लड़ाई होती रही, गोलियां चलती रही, ग्रेनेड्स फटते रहे, लेकिन उसके बाद 173 लोग जो उस पे सवार थे वो सारे बचा लिए। कैप्टन डलें जो थे उनको बुलेट वुंड्स लगी थी,
राइट एल्बो और थाई में। The crew had a specific responsibility, the duty to save the hostages and to safeguard the plane. The crew in general and the captain in particular, they all rose to the occasion. जो 30 स्पेशल फोर्सेस के कमांडो थे उसमें से 9 जो थे वो जख्मी हुए थे और जिसमें से एक जो था he was seriously wounded. When I assessed the gravity of the GIGN men's injuries, and when we learned that none were fatal, then yes, I could consider that the operation overall had been a success. और जो पैसेंजर्स थे 161 जो कि सरवाइव किए थे ये गोली बारूद, उसमें से बहुत कम को ही थोड़ी बहुत चोटें आई थी। I cannot say that I was calm that day, but I considered that there was no other decision to be made than the one I took. So the only thing that was left for me was to hope that things would unfold well. And as a matter of fact, they unfolded exceptionally well. I would not have dreamed that they would go that well. जितने भी members थे of these French special forces और जितने crew थे उनको highest national honors मिले थे, उनको सम्मानित किया गया था इस इंसिडेंट के बाद for the courage they had shown. For a long time, I kept seeing the faces of the 3 dead passengers that I couldn't save. Then, when the time of the medals came, I realized that I had helped save 170 people. It's a lot more gratifying, and it allowed me to mourn and get over it. I don't wear the medal, but I'm proud of having it, and I consider that we deserved it. We only did what we were supposed to. Our job. It was a textbook mission, one of the very successful missions ever carried out. But जो survivors ने trauma झेला था, उसकी यादें उनकी दिलो दिमाग और आत्मा में हमेशा के ऊपर छप गई होंगी। एक पैसेंजर जो इसमें सवार थी वो तो अपनी सेफ्टी के लिए इतनी कंसर्न्ड हो गई थी अल्जीरिया में कि उन्होंने फ्रांस इमिग्रेट कर लिया था। स्टुअर्डेस क्लोर डोमिया जो थी उनको एयर फ्रांस ने धन्यवाद भी दिया था इस इंसिडेंट के बाद, लेकिन उन्होंने एयर फ्रांस के साथ आगे कार्य नहीं किया। क्रिस्टो मोरैन ने भी एयर फ्रांस की जॉब छोड़ दी थी इस इंसिडेंट के बाद और वो उसके बाद एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्यरत थे। कैप्टन डेलाम ने अगले 9 साल तक एयर फ्रांस के साथ कार्य किया और उसके बाद वो एयर फ्रांस से रिटायर हुए। ये बाद में कंफर्म भी किया गया था कि हाईजैकर्स का जो इनिशियल प्लान था वो था कि इस प्लेन को उड़ा दिया जाए ऑन दी आईफल टावर, जो कि फ्रांस का एक नेशनल सिंबल है। और आप सोचिए कि कितने लोग मारे जाते हैं कि अगर प्लेन जो है पेरिस की सड़कों पे क्रैश किया जाता। और ये हाईजैकिंग दुनिया ने भुला दी विद टाइम, लेकिन 7 साल के बाद फिर से दुनिया ने यही एक मंजर देखा जबकि प्लेन्स को हाईजैक किया गया था। I went to do some shopping and I bumped into a friend who said a plane has crashed into the World Trade Center. I went home and stayed sitting in front of the television for 24 hours. I couldn't move or eat or do anything. All those images came back to me, and I asked myself, is that what was supposed to happen to us? J'étais convaincu du fait
I was convinced that the terrorists wanted to crash the plane over Paris. To them, it would have been a great feat. Crashing a plane on the Eiffel Tower or the Élysée Palace would be an extraordinary feat. Above all, I kept thinking, we had apprentice terrorists, boys who didn't understand very well what they were doing. But voila, they taught everyone a lesson. So दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। और ये शो आ रहा था आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान। ये शो जिसमें हम चर्चा करते हैं धरती पे घटित अलग अलग दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की। और आज के शो में हमने चर्चा करी 24 से 26 दिसंबर 1994 की एक घटना, द हाईजैकिंग ऑफ द एयर फ्रांस फ्लाइट AF 8969। अगर आपको मेरे शो के रिकॉर्ड्स कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि bhambri.r@gmail.com। तो दीजिए इजाजत आपके होस्ट, आपके दोस्त भामरी को समेटने की आज का शो। मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन, ठीक इसी समय और ठीक इसी शो में। और शो चलेगा आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।